वेल मेरे ख्याल से मैं हमेशा वेलनेस को बहुत ज़्यादा अहमियत आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि किसी ना किसी तरह से एक कैटलिस्ट की तरह ही सही बट मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि हेल्थ और वेलनेस को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए एंड दैट्स वाई आई थिंक आई एम ऑन दिस वॉर फुटिंग to make sure that I make use of all my social media platforms or whatever power I have to bring about a certain awareness when it comes to health and wellness. तो हाँ, तो ये मैं believe तो ज़रूर करती हूँ. तो awards like this is very, you know, they're really encouraging for people like us who are in the wellness business. तो yeah. See, मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है उसके ऊपर. लेकिन I really think that, you know, voting, don't do it as a duty. It is your right and you have to exercise that right and you have the power to voice your mind and to voice what you feel in that ballot. So you should let go of the opportunity. तो please जाके vote करिए और मैं तो encourage करूँगी voting. What's my wellness mantra? स्वस्थ रहो, मस्त रहो. हमने अभी आपका इंस्टा पेज पर देखा तो फोटो लाइट्स कैमरा एक्शन सरप्राइज फॉर अस वो क्या है मतलब आर यू नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टर और इट्स लाइक व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? Well, I have gone in that direction, but you will soon get to know about it. इसका खुलासा मैं करूँगी बहुत जल्द और उसके लिए एक अलग दिन मैं चुनूँगी. आज है इनका दिन तो इनको हम सेलिब्रेट करते हैं. थैंक यू. I think relaxation life में बहुत important है. I think we are living in a time where we get stressed about a lot of things. There's a lot of information going into our systems. So I think relaxing is very important. I think taking vacations with family is very important. तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं अपनी family के साथ vacation लेना पसंद करता हूँ. And I like to go to destinations which are relaxing and हम सबको साथ में वक्त मिल सके. You can rejuvenate, you can think again, you can spend time with yourself. And so I think relaxation is very important and therefore for me spas are important. I'm also into fitness and I think it's very important to as much as you go to the gym और आप जितनी मेहनत करते हो अपनी बॉडी बनाने में उतनी आपको ध्यान देना चाहिए अपनी बॉडी को रिकवर करने में. So I believe in recovery a lot. So I think it's very important. Shahid bhai, congratulations for Kabir Singh. It's a crazy reaction. Thank you. और you know that Prabhas also commented that you are better than Vijay's version of Arjun Reddy. What do you want to say about it? No, I spoke to Prabhas and he was very kind. Actually, him and me share a hairstylist. आलिम मेरे भी बाल बनाते हैं और उनके भी बनाते हैं. And वो उनके साथ ही थे तो कबीर सिंह की ट्रेलर की बात चल रही थी तो he called and wanted to speak to me and he was very very kind. I was very overwhelmed because you know he is such a big star and he is you know Mahendra Bahubali for us forever and always. So it was really cool to hear such nice words. Hello. What's up? So yeah. So no, it was very nice to get such encouraging words because you know ये हिंदी ऑडियंस शायद इतना ज़्यादा नहीं जानती है लेकिन ये फिल्म जब तेलुगु में बनी थी अर्जुन रेड्डी तो ये बहुत आइकॉनिक फिल्म थी और जिस तरह का प्यार इस फिल्म को मिला है बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं. जैसे कुछ फिल्में मेरी भी हैं जो मुझे ऐसा लगता है लोग कहते हैं कि यार ये फिर से नहीं बननी चाहिए. यू नो यू शुडंट टच समथिंग दैट्स सो गुड एंड मुझसे भी शायद अगर कोई कहे टू डू सम ऑफ माई परफॉर्मेंसेज आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट अगैन. बट ऑनेस्टली द सेम फिल्म मेकर वांटेड टू मेक इट एंड मुझे रोल बहुत एक्साइटिंग लगा. मुझे ऐसा लगा कि यू नो यूजुअली लोगों ने मुझे हमेशा थोड़े एजी कैरेक्टर्स में पसंद किया है लेकिन वो फिल्में जो हैं वो बहुत थोड़ी सी हैवी होती हैं तो यू नो वो जो उनका जो एक मेन स्ट्रीम अपील होता है वो कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड होता है बिकॉज उड़ता पंजाब जैसी फिल्म का सब्जेक्ट मैटर इतना डार्क है. आप ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेप के बारे में बात कर रहे हैं, यू नो थोड़ी हार्ड उसका सब्जेक्ट था तो वो सब लोगों तक आप नहीं पहुंचा सकते. हैदर जैसी फिल्म है वो यू नो थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल फिल्म है
तो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस करने का बहुत मौका मिलता है, लेकिन शायद मास ऑडियंस तक वो कितना पहुंचती है, यू नो वी नो दैट इट डजंट डू दोस काइंड ऑफ नंबर्स। तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके अंदर मुझे लगा कि ये बहुत ही अपीलिंग फिल्म है आम आदमी के लिए, बहुत ही कमर्शियल फिल्म है, लेकिन कैरेक्टर बहुत एजी था, परफॉर्म करने के लिए कुछ बहुत अलग करने का मौका मिल रहा था। सो आई जस्ट कुडंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी, यू नो, अदरवाइज आई थिंक जो विजय देवरकोंडा ने परफॉर्मेंस किया है अर्जुन रेड्डी का, यू नो ही विल ऑलवेज बी द ओरिजिनल एंड आई फील ही वाज स्पेक्टेक्युलर इन द फिल्म। मैंने पहले भी कहा है कि कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी शायद कजन्स हैं, लेकिन दे आर नॉट द सेम पर्सन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग डिफरेंट इन ओरिजिनल। एंड यू नो वी हैव ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम अर्जुन रेड्डी एंड एवरीथिंग इन द फिल्म, and the filmmaker is the same. Sandeep Wanga is you know, he's just one film old, and he made his first film and everybody just went berserk about it. And so we've tried to retain everything that is in the original, but we've tried to also bring a little bit of new into the film, because it's important to rediscover the journey of the character, because we have shifted the fact that he is now from Delhi and Mumbai and his name is Kabir Singh. So we've changed the backdrop, and therefore his family has changed, his upbringing has changed. But the essence and the fundamental energy of the character, we've tried to retain it. So I'm very excited, and it's out on the 21st of June, and very overwhelmed with the reactions, honestly. मुझे बहुत अजीब टाइप के reactions आ रहे थे कि this is what we want to see you do. So I was like, oh, I guess I was doing something wrong before this, because people have liked this. So I'm very excited. It's a very special film, and it's a very important film, and I'm very happy that people are liking it. ट्रेलर कब आ रहा है सर? हाँ, ट्रेलर कब आ रहा है? आई थिंक मई में आएगा, यू नो। कई बार ये डिस्कशन, आई थिंक द लेडीज आर वेटिंग। हाँ, you wanna come join? Thank you. Hi, how are you? Pleasure. So much for being here. Absolutely, it's my pleasure to be here. I'll join you in 2 minutes. Yes, please carry on. और कुछ बचे? हाँ, ट्रेलर कब आएगा? trailer will be out in May. Actually, we had discussed the fact that Kriti, why don't you finish? I'll go back. Doesn't look nice. So basically, we were thinking of whether we should put out a teaser or not, because usually 2.5 महीने पहले आप कुछ डाल रहे हो मार्केटिंग के लिए, वो आजकल होता नहीं है. But when we saw the teaser, we were all very happy with it, and so we just said let's go and put it out. So the right time for the trailer will obviously be 5 weeks before the release of the film. So I think around the second week of May the trailer will come out, and then the film will be out 1 month after that. Yeah, even I saw a poster of Mental Hai Kya, and it's had the same release date. I think our teaser had come out a couple of weeks before that. So yeah, I guess they're also releasing, so all the best to them. Man, you know, if a film is good, regardless of anything, people come to watch it. And if a film is not good, even if it has a solo release, doesn't do well. You know, the last 1 year we've seen that happen with so many films. You know, we've already said that we're coming on that date, so the ball was always in the, you know, the other film's court. But you know, all the best to them, man. जी जी कौन से 2 ग्रुप्स हैं? मैं जस्ट डिस्क्लेमर बिफोर यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, मैं 12 दिन की छुट्टी पे था, तो एग्जैक्टली पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ है मैंने बिल्कुल नहीं देखा है, तो आई विल आंसर योर क्वेश्चन इफ आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन. आई एम गेसिंग आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन. क्या हो गया ये ग्रुप्स का, तो मुझे पता ही नहीं है. कुछ ग्रुप्स का इशू हुआ. But those are individual choices. As the citizen of this country, you have to decide who you want to vote for. So I don't think that has to do with whether it's a part of the film industry or not. I think that's exactly what voting actually is, which is going out there and deciding who you believe in, who you want to vote for. So there's nothing wrong with that. Thank you guys. Thank you, Paji.
I think just a fun evening, meeting lots of nice people. One I've already met here, and just to have fun, yeah. Spa को I feel like in general spa is very important, especially हम जिस profession में हैं, to keep rejuvenating ourselves, to keep like the skin, the hair, all healthy and nice, and sometimes just to have a nice body massage so that you release all the stress that you have in your body. So yeah, I feel like spa is very important. It's important to take care of your hair, your skin, and yourself as a person. Maybe after Luka Chuppi, we all are waiting for Patiala. So what's the status and what's going around? Where it's releasing on 19th of July, and of course the trailer will be out accordingly, and it's a completely different kind of a comedy. I feel it's a slightly spoofy kind of a comedy. I don't think that kind of take on comedy has been done before. It shaped up really well. I'm still in the middle of dubbing of the film. It's got amazing music, and yeah, I'm also really looking forward to finally releasing it because मैंने वो actually लुका छुपी हाउसफुल सबसे पहले शूट करा है. तो अभी डबिंग करने में गई थी तो मैं भूल गई थी क्या है फिल्म. So how is it working with Diljit Bhai and Chucha? Chucha I've worked with before also. He's a brother. He's someone who I'm in touch with very very often. And उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग है. धमाल है उन दोनों की केमिस्ट्री. बहुत अच्छा था. हमने चंडीगढ़ में काफ़ी शूट किए और बहुत मस्ती वाला एक्सपीरियंस था. ऑफ कोर्स दिलजीत इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. आई थिंक व्हाट रियली amazed me is that we had not really met before so much, and when we did our first scene together in on set, उस सीन में ना डायलॉग नहीं थे. वो एक सॉन्ग का जैसे स्टार्टिंग का मोन्टाज होता है वैसा था, एंड केमिस्ट्री उसमें भी दिख गई थी क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन था, कुछ प्लान नहीं था. So I think when you have a brilliant actor in front of you, and the chemistry gets set from the first scene, I don't think you have to worry in the film at all, and then you just have to have fun. That's what we did. So how different is your character from your Comedy full on. I think I love comedy. I think it's very difficult to make people laugh firstly, and it's very important also with the kind of stress that we all have in our lives in general. When the audience goes into a theatre and you can manage to make them laugh and forget all their stress, there's nothing better than that. And I'm glad I'm getting the opportunity back to back to do it in different avatars, in different kind of characters. So here you will see me play a crime journalist who's serious about her profession but in a comic environment. And थोड़ा पंजाबी फ्लेवर है, थोड़ा फिरोजपुर का फ्लेवर है, थोड़ा सा बात करने के तरीके में पंजाबी लहजा होगा. या Thank you. Spa, of course, I think not just being an actor but otherwise also, हाँ important है in the sense, especially an actor because आप बहुत travel करते हैं, बहुत सिर्फ physical नहीं, एक mental rejuvenation के लिए भी I think it's quite nice, it's quite relaxing, it's called therapeutic, so yeah, I love it. Yummy, congratulations for 3 years in the Thank you so much. Yeah, I know. It was a double celebration for you. Yeah.
I know, your first film and your latest film kind of it was a dual celebration for, of course, both the teams together, and I'm very happy. लगता नहीं है कि actually 7 years हो गए. I still feel like I'm just 7 days old in the industry, but I'm very happy. I think it's been a very interesting journey so far, and there's still a long way to go. And thank you so much for always being so supportive. And now I think everybody's familiar with everybody, I think, by this time. And thank you so much, of course. Wellness mantra is eat healthy, stay happy, have nice people around you who make you happy and who take out the best version of you. Yeah, maybe should be a project you would like to share with us. Yes, I wish I could, but I think let the proper official announcement come forward. I think that'll be better. So we'll talk about it next time. Thank you so much. मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके. I think me time is very important, and I think spa time is me time, and I think it's actually a time where you get your inner glow back on track. So yeah, it's really important. Thank you. मैं क्या बोलूँ, मेरी स्टाइलिस्ट सनम What's my? I think to be happy with who you are and to be kind and be generous. And I think if you're happy, like truly happy, you'll always glow. I think, yeah. Spa is one of the most important parts of our lives, right? Because if we are working, if we are stressed every single day, we need to relax at the end of the day. So I usually go to massage, and I do it even at home, right? Because spa means even to take care of yourself at home. That means I don't know, some face mask or taking care of my skin, body scrub and all this. I do it at home. I do it at the salon or the specific spa. So I think it's very important, especially for women, to take care of their skin, of their body, of their health, because spa means health first of all, besides beauty and aesthetics. So yeah, I do that. I love it. I think there is no person in this world who doesn't love going to the spa, right? So I'm happy to be here and to celebrate this very beautiful part of our lives, right? Yes. Excuse me? Of course, it's beautiful. I think it's outstanding, and there is so much happening there. I can't wait for everyone to watch the movie and to really enjoy the story of a nation. And
Thank you so much. Nalanda. I'm wearing Nalanda tonight and Satyani jewelries. Thank you very much. I'm very happy and I feel blessed, honestly, and I'm so grateful for all of you who received me so well, who welcomed me so well, and the fact that I had the chance to sing songs with amazing artists, to be in the studio and compose and be part of the whole creation process with so many artists. I feel really blessed for that. It's a beautiful journey. It's still going on, and I'm discovering every single day. I'm discovering more and more and more, and I love it. Thank you. की बातें हो रही हैं तो स्पा कितना इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ में, आप इसे कितना फॉलो कर पाती हैं? आई थिंक बहुत ही ज़रूरी होता है, स्पेशली जब हम लोग सब बहुत ओवरवर्कड होते हैं या ज़्यादा काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक चाहिए होता है, रिलैक्सेशन चाहिए होता है। एंड आई थिंक ये जो स्पा का कॉन्सेप्ट है सदियों से चला आ रहा है हमारे देश में। हमारे जो एंशियंट आयुर्वेद देखेंगे, मसाजेस देखेंगे, चाहे वो केरला में हो या डाउन साउथ हो या नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं भी हो, ये ऑलवेज़ हमारी एक कल्चर में रहा है। मसाज जब बच्चा पैदा ही होता है तभी से हम उसको मसाज करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक ये अब आप बहुत बड़े एग्जाम्पल्स में आपको क्या बताऊं कि मैं एक शो पे थी एंड हमारे एक बहुत, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन बहुत ही एक हमारे फेमस एक उम्दा रेसलर जो ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं, ब्रॉन्ज, उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया कि वो जब 9 या 11 साल के थे वो पैरालाइज थे एंड उनकी माँ ने सिर्फ राई के तेल से रोज़ उनको मसाज किया टिल द टाइम उन्होंने वादा किया था अपने आप को कि मैं जैसे ही उठूँगा मैं पहले अखाड़े में जाऊँगा, एंड एक्चुअली उन्होंने वो किया एंड टुडे ही इज़ वन मेडल्स फॉर द कंट्री। सो इसमें है, पावर है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत ज़रूरी है सबके लिए टू लर्न टू रिलैक्स। एक तो आजकल स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में, उसके अलावा टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नवीना जी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में फिट एक्टर मानी जाती है, तो आपका वेलनेस और किस एंगल से? फिटनेस मंत्रा हमें जो देखने को फिटनेस मंत्रा, आई थिंक देखिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ, आई डोंट बिलीव इन ओवर एक्सरसाइजिंग, लेकिन हाँ आई थिंक कुछ समय सबको अपने लिए निकालना चाहिए, एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे, ईदर एनी काइंड ऑफ कार्डियो, चाहे आपको वॉकिंग पसंद हो, गर्मियों में स्विमिंग पसंद हो, योगा पसंद हो, वो 40 मिनट हर एक को अपने लिए निकालना चाहिए। एक आखिरी सवाल क्यों हिंदुस्तान में, एक आखिरी हिंदुस्तान में वोटिंग चल रही है, मुंबई में 29 को वोटिंग है, लेकिन वोटिंग को लेकर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस तरह से दो ग्रुप में डिवाइड हो चुकी है। आप ये देख रहे हैं, कितना मानते हैं कि वोटिंग को लेकर दो ग्रुप में डिवाइड हो जाना? आई थिंक वो सब पोलराइजेशन तो सब जगह हो चुका है, ट्विटर पे कहीं भी आप ले लो, सोशल मीडिया, बट आई थिंक सबकी इंडिविजुअल चॉइसेस रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड सबको स्पेस देना चाहिए, बट वोटिंग चाहे आप जिसको भी करें, बट वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये मौका लेती हूँ और प्रार्थना करती हूँ लोगों से कि प्लीज़ 29 को ज़रूर निकलिएगा अपने घरों से। ये आपके लिए सेलिब्रेट करने की छुट्टी नहीं है, हाँ हमारी डेमोक्रेसी सेलिब्रेट करने की छुट्टी है, तो अपनी डेमोक्रेसी, अपने हक को सेलिब्रेट कीजिए एंड प्लीज़ गो आउट एंड वोट ऑन द 29th of April।
I think Parinita and the entire team always put together something wonderful. I'm very much into fitness and wellness and all things like that. So I think it should be a fun evening and maybe turn out to be a little special for me too, hopefully. Well, with my launch into detox tea and Ayurveda and things like that. And hopefully the fact that I'm all about fitness, hopefully I inspire people. So maybe I might get lucky tonight as well. You're getting a word to know that. Oh yeah. About the details. I'm just really excited to be appreciated for my commitment to wellness and fitness. It's something I really believe in. And if people get inspired by it and people appreciate it, it feels really good. It was a big step for me to step into being an entrepreneur, launching Detox Tea with my partners Gaurav and Hansika, and Fitox has done really well. We just had another meeting today because we're getting ready to take it to the next level. So it feels really good and I hope to venture into more such things. Thank you.